Assalamu alaikum, dear students. I'm Ataullah Jan, lecturer Pakistan study. In today's lecture, we will discuss the natural topography of Pakistan. In this lecture, we will discuss the features of land of Pakistan, various distributions of the land of Pakistan. सबसे पहले अजीज तलबा हम पाकिस्तान के लोकेशन के बारे में जो है वो बताएंगे जो इमेजिनरी लाइंस है दुनिया का इसमें पाकिस्तान जो है वो 24 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 61 डिग्री ईस्ट टू 76 डिग्री ईस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो लॉन्गिट्यूड पर जो है वो पाकिस्तान नेचुरल लाइंस पे जो आता है जो एक इमेजिनरी लाइंस हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो है वो नेबरिंग कंट्रीज वो कौन कौन से हैं? इंडिया लाइज टू इट्स ईस्ट विद 2912 kilometer border which is known as the red cliff line. China lies to its north with 523 kilometer. अच्छा, इसमें ये जो 2900 किलोमीटर है इसमें थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन जो ज़मीनी बॉर्डर है पाकिस्तान का इंडिया के साथ वो 1610 किलोमीटर है। इसके साथ साथ हमारा हिंदुस्तान के साथ इंडिया कश्मीर में भी जो है एक बॉर्डर है। इसी तरह इंडिया के साथ हमारा जो है वो समंदरी बॉर्डर है। तो ज़मीनी बॉर्डर जो है वो 1610 किलोमीटर है और ओवरऑल जो टोटल बॉर्डर है वो तकरीबन 3000 के लगभग जो है वो चंद किताबों ने 3300 किलोमीटर भी लिखा है। चाइना लाइज टू इट्स नॉर्थ विद 523 किलोमीटर बॉर्डर। चाइना के साथ हमारा गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 523 किलोमीटर का बॉर्डर है। कुछ किताबों ने 505 किलोमीटर भी लिखा है। बहरहाल चाइना के साथ हमारा जो है वो तकरीबन 500 से ऊपर किलोमीटर का बॉर्डर है। अफगानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो कुछ किताबों ने 2252 लिखा है, कुछ किताबों ने 2430 लिखा है और कुछ किताबों ने 2600 भी लिखा है और इसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है इस बॉर्डर को। और ये बॉर्डर जो है ये 1893 में 12 नवंबर को अमीर अब्दुर्रहमान और ड्यूरन मोर्टिमर के दरमियान जो है वो ड्रॉ हुआ था 1893 में। ईरान lies to its west with 909 kilometer border known as Pakistan-Iran barrier. ईरान के साथ हमारा जो बॉर्डर है ये बाज़ किताबों ने 810 किलोमीटर भी लिखा है, कुछ किताबों ने 909 किलोमीटर लिखा है। बहरहाल हिंदुस्तान के साथ हमारा जो है वो तकरीबन 800-900 किलोमीटर बॉर्डर है। द अरेबियन सी लाइज टुवर्ड्स पाकिस्तान साउथ में हमारा जो है वो अरेबियन सी। अब पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। 4 सूबे इसमें सबसे आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो है वो पंजाब है। इसकी तकरीबन जो आबादी है वो टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 52 to 56% है पाकिस्तान के और एरिया वाइज जो है इसकी 26 है। और इसी तरह रकबे के लिहाज से जो है वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान की आबादी जो है वो सबसे कम है पाकिस्तान में, यानी 1 करोड़ 25 लाख आबादी है और अगर हम देखें तो सिर्फ कराची शहर की आबादी जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो और लेकिन इसकी जो रकबा है इसके साथ बलूचिस्तान के साथ ये 44 to 47% पाकिस्तान है, यानी 44 से लेकर 47% का जो टोटल एरिया है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान में है, लेकिन आबादी जो है वो सिर्फ 7% है। और मैंने आपको मिसाल दी कि कराची जो एक शहर है, एक छोटा सा शहर है बनिस्बत बलूचिस्तान के, तो उसमें 1.5 करोड़ आबादी है। Sindh is the third largest in area, 18% of the Pakistan, and second in population, 23% of population of Pakistan. It is located to the southeast of Pakistan. खैबर पख्तूनख्वा
جو ہے اس کی آبادی جو ہے وہ جو ایریا ہے وہ 6% ہے، اور اس کی پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹوٹل جو ایریا ہے اس میں 6% جو ہے وہ کنٹریبیوشن ایریا وائز سے خیبر پختونخوا کرتی ہے، اور پاپولیشن جو ہے وہ 14% ہے۔ پاکستان امپورٹنٹ سٹیز: اسلام آباد، راولپنڈی، کراچی، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، پشاور، کوئٹہ، سیالکوٹ، چترال، گلگت، سکر، گوادر، مردان، ڈیا خان، اور یہ بہت سارے ہیں۔ یہ پاکستان کے پروونسز ہیں، نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اگر ہم اوپر چائنا کی سائڈ پہ دیکھیں تو نادرن ایریاز میں گلگت بلتستان میں ہمارا چائنا کے ساتھ بارڈر ہے، اور پھر جموں اور کشمیر کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ بارڈر سارا ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے، اور اسی طرح پھر انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ہے پنجاب میں اور سندھ میں بھی بارڈر ہے، اور پھر سمندری بارڈر جو ہے وہ سندھ میں وہ بھی کچھ ہمارا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سندھ بھی ہے اس میں، بلوچستان کو بھی آپ دیکھیں، بلوچستان کی جو باؤنڈریز ہے وہ ایران اور افغانستان اور عربین سی میں ہے۔ اور اس طرح خیبر پختونخوا کو اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا یہ افغانستان کے ساتھ جو ہے فیڈرل جو ارسٹوائل فاٹا ہے اس کے راستے جو ہے، اور کچھ کچھ چترال اور دیر، لوور دیر اور اپر دیر میں ہمارا ڈائریکٹ جو ہے وہ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ۔ یہ سارے شہروں کی لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھیں، اس میں ہے کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، ملتان، لاہور، پشاور، اسلام آباد اور چترال ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے امیجنری لائنز جو ڈسکس کی لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ کے، یہ تقریباً ایک لانگیچیوڈ اور لیٹیچیوڈ جو ہے وہ 69 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے ایک پوائنٹ میں۔ یہ پاکستان کی جو ہے وہ سٹی کا میپ ہے۔ آپ لوگ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور سندھ میں یہ سارے سٹیز جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چونکہ خیبر پختونخوا ایک علاقہ جو ہے وہ چھوٹا ہے بنسبت ان باقی 3 صوبوں کے ساتھ، تو اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے علاقوں کے نام نہیں لکھے گئے ہیں اس میپ میں۔ Topography of Pakistan: it means that the study of surface feature of land, both natural and artificial features. Pakistan is primarily divided into 6 topographical areas. پاکستان کو 6 جو ہے وہ 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں جو پہلا ہے وہ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز ہے، پھر ویسٹرن ماؤنٹینز ہے، اور بلوچستان پلیٹو ہے، پٹوار پلیٹو ہے، اور ساٹھ لینڈ ہے، دی انڈس پلین ہے، اور ڈیزرٹس ایریا ہے۔ اب جو ناردرن اور نارتھ ویسٹرن ماؤنٹینز ہے اس میں 3 رینج جو ہے وہ آتے ہیں: کراکورم ہمالیاز اور ہندوکش۔ کراکورم ماؤنٹینز: this range runs from the Tibet in east to the Hindukush and west, with average height of 6,100 meters. Highest peak of Pakistan is K2, and that is 8,611 meters. Is also on this range. It has long glaciers like Siachen 72 km and Biafo 62.5 km. The Karakoram Mountains lies not to the river Indus. Khunjra Pass is also located on these mountains, which connects Pakistan with China. The Himalayas: this range runs from India in east to Pakistan in west, with average height of 6,000 meters. Highest peak of the world, Mount Everest,
8,848 meters is also in this range. On this range, the Himalayas lies south to River Indus. They consist of three. They consist of three parts: the Great Himalayas, the Lesser Himalayas are Pir Panjal, and the Sub Himalayas are Shivalik. उर्दू में इसको शिवालिक भी कहा जाता है. Snow-capped peaks, steep slopes, scree, bare rocks, shaped valleys, and high altitude. Height increase from south to north. High passes like Khunjrab, Lawari, and Shandur passes. Snow-filled areas. Economy in the northern mountains. Farming is practiced on the terraced fields where wheat, maize, barley, rice, and vegetables are grown. Tourism is an important industry there. Small kit cottage industry products, carpets, embroidered material, rugs, and other handicrafts. Food processing is also an important. The Western Mountains. These mountains consist of the mountains north, mountainous north, the Potwar Plateau, Salt Range, Safed Cove, the Waziristan Hills, and intermountain valleys. The Suleiman and Kirtar mountains also mountains and the Balochistan plateau. वेस्टर्न माउंटेन्स में डेढ़ स्टूडेंट्स ये जो हमारा वेस्टर्न एरिया है खासकर जो किरतार रेंजेस जो कि बलूचिस्तान और सिंध में है और इसी तरह फिर ये जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है जिसमें मुख्तलिफ इलाके आते हैं जिस तरह वजीरिस्तान हो गया इसमें सारे जो हिली एरियाज है ये जो रेंज है माउंटेन का इसको जो है वो वेस्टर्न माउंटेन्स कहा जाता है. नॉर्दर्न माउंटेन्स जो कि चतराल और गिलगित में वाक़ थे फिर इसी तरह हिमालय जो है वो इसी तरह जो गलियात है और इस्लामाबाद मारगल्ला हिल से यहाँ तक आ जाते हैं. सफ़ेदकोर रेंज this runs from east to west with an average height of 3,600 meters. It merges into Kuwait Hills in the east, where the valley of Kuwait is situated. Peshawar Valley is also in this region, which connects Pakistan with Afghanistan through Khyber Pass. Dear students, ये जो कुवाट में जो पहाड़ी सिलसिले है ईस्ट में ये जो है वो वहाँ तक है और पेशावर वैली भी इस सफ़ेद को रेंजेस में आता है. वज़ीरिस्तान हिल्स. These hills are located between the Kuram and Gomal rivers. It consists of Banu Valley, Tuchi Pass, Deir Ismail Khan, Gomal Pass, Kuwait Valley, and the valley of Peshawar. Suleiman Kirtar Mountains. These mountains extend from Gomal River to Arabian Sea. They lie between Balochistan Plateau and Indus Plain. Highest peak is Takht Suleiman, that is 3,383 meters. A major passes in this mountain is Bolan Pass. Economic activities and lifestyle. Sheep and goat rearing is the main occupation. Abundant in mineral resources, climate and relief don't support vegetation. Infrastructure is not good. यहाँ पर भेड़ बकरियाँ जो है वो चराए जाते हैं और इसी तरह मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा है. फिजिकल मैप ऑफ पाकिस्तान. ये अगर हम देखें इसमें फिजिकल मैप में तो पूरी डिटेल के साथ जो है अफगानिस्तान और इसी तरह इंडिया और चाइना और ये जो इलाक़ी बाउंड्री वाइज जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं इस मैप में. The Balochistan Plateau. Balochistan can be divided into 5 natural regions. बलूचिस्तान की बात हो रही है कि बलूचिस्तान को नेचुरली फिर फर्दर 5 रीजन में तकसीम किया जाए. एंड मेनी plains. Balochistan Plateau include 2 plains. Sibi Kachi Plain is located in Nasirabad.
Nasirabad district, and Lasbela plain is located in Lasbela district. The district of Chavi, Karan, and Awashuk are considered the dry land of Balochistan. These districts of Karan, Washuk, and Washuk are home to Karan deserts. The Karan deserts extend westward and merges with Iranian deserts and the coastal area जो समंदर के इलाके हमारा जो बॉर्डर है हिंदुस्तान के साथ और इसी तरह अरेबियन सी में तो these can be divided into eastern and western part. The eastern comprises of Lasbela plain, while the western part is known as the Makran coast range. Relief feature of Balochistan plateau. It plateaus circled by the dry mountains, rugged land, gravel plains, and inhospitable terrain for forming highly mineralized plateau, limestone, copper, gold, coal, sulfur, and chromites. In north, there are steeps, uh, but in south, mostly gentle peaks. Major rivers are Zob, Bolan, Hab, Dasht, Purali, Mula, and Hengol. Economical importance provides a route to Afghanistan and Central Asia. Major gas field in Sui is in Sui. Agriculture is limited, wheat and barley ground. Water resources are scarce. Fish is caught but mostly is sent to Karachi, Potwar Plateau and Salt Range. They are located to the south of Islamabad between river Indus and river Jhelum. Potwar Plateau has residual hills such as Kala Chitta and Eri Murat like rise over 1000 meter. It is landscape of ridges, ravines and troughs. A large part has been dissected and eroded because of the running water. The plateau is rich in minerals like rock salt, gypsum, limestone, and coal and oil. Agriculture is done on the large alluvial plains. The Salt Range covers most of the Jhelum, Chakwal, Calabar, and Mewari districts. This name is because of salt mine at Skura. Its highest peak is Sakesar Peak. Kalakahar is beautiful lake of the area. This range is rich in minerals like rock salt, gypsum, and the Indus. The river Indus and its tributaries drain the Indus plain located throughout most of Punjab and the central part of Sindh. Its northern part is known as the Upper Indus Plain, while the south part, Sindh and Balochistan areas, is Lower Indus Plain. Upper Indus Plain is the region from the Attock to Mithankot that is the most of the Punjab with height of 180 meter to 300 meter. Five big rivers drain this plain and cover it with alluvial soil. Some dry hills known as Kirana Hills appears near Sargodha, Chinot, and Lower Indus Plain is from Mithankot to Thatta. It is a very fertile and area, but agriculture is limited because of less rainfall. Its northwestern areas suffer from water logging and salinity. Rohri Ridge of limestone is an important feature of this area. This area is drained by Indus River. Topographical features of the Indus Plain. Active floodplain. The narrow strip of land on both sides of the river is called active floodplain. It found along all the rivers except for this southern half of the River Ravi, and gets flooded every year. It is 2 to 3 meter above river level and 10 to 18 kilometer wide. Alluvium deposited every year there, which makes the land old floodplain. These floodplains are 10 to 15 wide and 3 to 5 meter above river level. They get flooded after around 7 to 8 years when there is heavy monsoon rainfall. They are covered with alluvium deposited at the fast scope. These are steep slopes which can be found around 40 kilometers away from the river.
They are 15 to 11-meter high and 5 to 8 wide. Alluvial terrace bars, these are the areas of higher ground between rivers. They are found only in upper Indus plain. They are 12 to 10 to 12 meter above river level and 25 kilometer wide. They are ideal for agriculture. There are three deserts area in Pakistan. Third desert, which is located between the river Indus and the river Jhelum. The third desert, which is located towards southeastern Pakistan. It can further be divided into Chulistan, Nara, and Tarparka deserts. Kharan desert, which is located in Balochistan. Wide range events change the landscape of deserts, constantly rolling sands dunes, weathering of rocks, lake of vegetation, and bare rocks are the main feature of the desert area of Pakistan.